बात की जाए। यस महाराज, ओवर टू यू महाराज। Om Jnanatimarandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we were hearing how Lord Nrsingadev had become very angry after he had fought with Hiranyakashipu and killed him. And then he'd been, all the followers of Hiranyakashipu, they'd come and attack Lord Nrsingadev, and Lord Nrsingadev also killed them. So it left him in a very angry mood. And then we heard all the different demigods come and offer their prayers. And they were describing how the Hiranyakashipu had restricted all their activities. But still the prayers of the demigods didn't pacify Lord Nrsingadev. तो कल हमने श्रवण किया किस प्रकार से नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए बहुत ही क्रोधित थे वो, और जब उनका हिरण्यकश्यपु का उन्होंने वध किया उसके पश्चात भी बहुत क्रोधित थे, और उनके जो सैनिक थे वो सभी मारे गए, और तत्पश्चात सारे देवतागण वहां पर आकर के सभी लोगों से आकर के लोग भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का क्रोध शांत नहीं होता है, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। So they suggested, let Lakshmi go before him. She's always with him. She's his consort. You know, Lord Nrsingadev is Vishnu and Lakshmi is the consort. So Lakshmi is the consort of Lord Nrsingadev. But she said to herself, well, I've never seen him in this form before. And he doesn't seem to recognize me. I don't recognize him. And he's so angry, he's not worrying about me. So I'm afraid to go in front of him. और तब सब लोग मिलकर सुझाव देते हैं कि अभी लक्ष्मी जी को भगवान के समीप भेजते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी कहते हैं कि ये रूप तो मैंने भी कभी देखा नहीं है, और इस रूप को न तो मैं पहचानती हूँ, और मैं जाऊंगी तो वो भी मुझे नहीं पहचानेंगे, तो वो भी इस समय वहां पर जाने से घबरा रही हैं उनके समीप जाने में। So then the suggestion came, let Prahlad go, because Prahlad, it was because of Prahlad the Lord has appeared. The Lord came to protect Prahlad from his father. So Prahlad definitely has a very special relationship with the Lord. Let Prahlad go in front of him. So Prahlad came in front of Lord Nrsingadev and offered his obeisances, and Lord Nrsingadev saw him, and Lord Nrsingadev was very happy, he was ecstatic to see Prahlad. And Lord Nrsingadev then placed his lotus hand on Prahlad's head. और तब प्रहलाद महाराज को सुझाव दिया लोगों ने कि प्रहलाद महाराज को जाना चाहिए उनके पास में, क्योंकि उनकी वजह से भगवान प्रकट हुए हैं, तो प्रहलाद महाराज उनके पास भेजते हैं। तो प्रहलाद महाराज जब उनके पास जाते हैं तो नरसिंहदेव भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनको देख करके, अद्भुत प्रसन्न होते हैं, और वो अपने हस्त को उनके मस्तक पर रखते हैं। So just the touch of Lord Nrsingadev's hand on the head of Prahlad Maharaj, it took away any, if there was any contamination there left in the body of Prahlad, it was removed, and it awakened transcendental knowledge in the heart, in the mind of Prahlad Maharaj, so that Prahlad was, although he was only a young boy, he was able to offer prayers. तो जैसे ही उनके
भगवान उनके सर पे भगवान के हाथ का स्पर्श हुआ, उनके अंदर जो भी और थोड़ी बहुत जो कलमश थे, बहुत ही कलमश, वो सभी दूर हो गए, पूरा हृदय शुद्ध हो गया। और जितना दिव्य जो अनुभूति होती है, आध्यात्मिक अनुभूति, वो सब कुछ प्रकट हो गई प्रहलाद महाराज के अंदर। So Prahlad Maharaj begins by offering prayers. He said, I have no qualification. He said, I'm from the family of demons. We're in the mode of ignorance and passion. And all these great sages and demigods, they're in the mode of goodness. But their prayers couldn't pacify Lord Narasingha. So I don't think I'm really qualified to be offering prayers. This was the humility of Prahlad. और तब प्रहलाद महाराज बोलना शुरू करते हैं कि किस प्रकार से मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, जहाँ पर कुछ भी भक्ति का कोई भी प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं, और लेकिन आपकी ही कृपा से मुझे ये जो अनुभूति है वो प्राप्त हुई है। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज बोलना शुरू करते हैं। Humility is very important qualification for any devotee. That if we want to do devotional service, we really have to have that humility. We see in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes items of knowledge. And the very first one, amanitvam adamvitvam, pridelessness and humility. That is very important. So Prahlad shows these wonderful qualities. तो विनम्रता बहुत ही आवश्यक गुण है, और भक्ति में उन्नति करने के लिए विनम्रता जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवद गीता में भगवान जब बताते हैं ज्ञान के जो सभी अंग बताते हैं, उसमें सबसे पहले ही किस प्रकार से बिल्कुल मान की इच्छा नहीं करना, गर्व से रहित और विनम्रता, ये गुण उत्पन्न करने चाहिए। And Prahlad says, I know that it's not just by any material means that we can become qualified to satisfy the Lord and to offer pleasing prayers to Him. Any kind of material qualification, our material intelligence, our good birth, our good education. He said none of these things will actually satisfy the Lord. We know Gajendra was an elephant, but he could satisfy the Lord. He didn't have any of these material qualifications, but he had devotion, and that is what the Lord wants. That is what satisfies him. तो कोई भी भौतिक उपलब्धि या भौतिक योग्यता ये भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकती, उनको प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे अच्छे कुल में जन्म होना, अच्छी इस प्रकार की, तथा जो हम कहते हैं इस प्रकार का ज्ञान विद्या, या अच्छे प्रकार से हमारे पास समृद्धि होना, ये भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि किस प्रकार से गजेंद्र, वो तो हाथी के शरीर में थे, और तब वो भगवान को संतुष्ट भी कर पाए। वो क्योंकि भगवान को संतुष्ट करने के लिए सबसे आवश्यक जो अंग है वो है बहुत सुंदर, बिल्कुल निर्मल जो हमारा हृदय है, वो भगवान को अर्पित करना, भाव। Prahlad Maharaj said, if one may be a Brahmana with all the best Brahmanical qualities, but if he is not a devotee, he is not as good as a person who is born in the family of dog eaters, who is a devotee. The Lord doesn't consider the birth, He considers who is a devotee and who is not. और तब कहते हैं प्रहलाद महाराज की, अगर कोई ब्राह्मण भी हो लेकिन अगर भक्त नहीं है तो वो चांडाल के समान है। लेकिन अगर कोई चांडाल ही क्यों ना हो, वो अगर भगवान की भक्ति में युक्त है तो वो पूजनीय है। वो तो भगवान इसलिए ये नहीं देखते कि हम किस कुल में जन्म लिए हैं, क्या है, ये है कि किसके अंदर भक्ति है, किसके अंदर भक्ति भाव नहीं है। So Prahlad Maharaj goes on to describe the nature of the material world. How in the material world, everybody is looking for some kind of happiness in the material world. But he said, this world is just like, he said, trying to find happiness in this world is just like looking for water in a desert. There's no water in the desert. The same way, you're not going to find real happiness in this material world.
और तब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस भौतिक जगत में सुख की इच्छा करना, सुख की खोज करना उसी प्रकार है जैसे कि रेगिस्तान में पानी की तलाश करना। वो संभव नहीं है, अर्थात इस भौतिक जगत में आनंद सुख प्राप्त करना संभव नहीं है। Prahlad Maharaj describes how people are all worshipping the Lord, trying to get material blessings from him. But he said, what's the good of all that? It's all so temporary. He said, I just look at my father. My father was so powerful. Just by his eyebrows, the demigods would have to, they would be so afraid of him. He'd just move his eyebrows and they'd be terrified. But Lord Narasingha came, and in a moment, he took away all the power and all the opulence of Hiranyakashipu. So Prahlad Maharaj said, I don't want to be like my father. I don't want to just get all of this opulence. It's useless, it's so temporary. प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस जगत में कभी कभी लोग देवताओं के पास, ऐसे शक्तिशाली लोगों के पास जाकर के शरण लेते हैं, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सब निरर्थक है। वो कहते हैं कि देखिए मेरे पिताश्री कितने जो हैं हिरण्यकशिपु, वो कितने शक्तिशाली थे कि उनके से भौवों को ऊपर नीचे करने से देवतागण भी डरते थे, उनसे कार्यकलाप करते थे, उन देवतागण उनके आंखों को देख करके, इतने शक्तिशाली थे। लेकिन भगवान नरसिंह देव ने एक ही क्षण में सब कुछ उनसे छीन लिया, सब कुछ चला गया। So Prahlad Maharaj said, I know you don't, that Lord Narasingha Dev, you don't discriminate between people who is higher and who's lower. You don't look at them like that. And when you give benedictions, you don't benedict them just according to their birth or according to their social position, but you look at their service and you know their desire, you know their heart, and you award them according to their qualification. और वो कहते हैं कि भगवान से कि आप तो उनकी ये स्थिति, जो भौतिक स्थिति है, किस उपाधि पर है, ये सब आप नहीं देखते, मुझे ज्ञात है। आप तो सिर्फ सेवा भाव देखते हैं जीव का और उनकी इच्छा क्या है, और उसी के अनुसार आप आदान प्रदान करते हैं। Prahlad Maharaj said that I was because I'm born in the family of demons, so I had very bad association from the beginning of my life. I had so much bad association. So I'm always fearful about the kind of association I have. और वो कहते हैं प्रहलाद महाराज कि देखिए मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूँ, बचपन से मैं बहुत भयभीत हूँ मैं कि किस लोग के कितने ऐसे जो संग हैं, असुरों का संग, वो मुझे प्राप्त है, इसलिए उनके संग में मैं हमेशा भयभीत रहता हूँ। Prahlad Maharaj says, I have to associate with my mind. And in my mind, there's so many material desires. And these desires were just like something pulling me into a blind well where there's so many snakes in the bottom. So I was just like following everybody else, all the other materialistic people. I was following their path, and I was going to hell. I was going into this well full of poison snakes. But somehow I was able to get some mercy from your servant, from Lord Narasingha Dev's servant, Narada Muni, and he accepted me as his disciple. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं तो अपने मन से भी वशीभूत होकर, मन के वश में रहते हुए, किस प्रकार से ऐसे एक भौतिकवादी लोग आगे बढ़ते हैं जीवन में भोग करने के लिए, उसी प्रकार मैं भी इस विष रूपी अंधे कुएं की ओर बढ़ता ही जा रहा था, कुएं में ही जाता जा रहा था। लेकिन ये इनके प्रकारेण आपकी कृपा से, आपके जो भक्त हैं नारद मुनि, उनका मुझे संग प्राप्त हुआ और तब मेरा जीवन बदला। Prahlad Maharaj said, my first duty is to serve him. I cannot give up his service because he instructed me
how to get transcendental knowledge. He taught me how to get out of this material, get free from this material energy. मेरी प्राथमिक सेवा उनके प्रति है, नारद मुनि के प्रति उनकी सेवा करना, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट किया कि किस प्रकार से इस भौतिक कलमश, भौतिक इस वृत्ति से दूर हुआ जाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से दूर हुआ जाए। ये ज्ञान मुझे उनसे ही प्राप्त हुआ। So Prahlad Maharaj is showing us or teaching us a very important point, that we first have to serve the spiritual master. We cannot go straight to God without going through the spiritual master. We have to please the spiritual master, and by the mercy of the spiritual master, then we can come to the Supreme Lord. तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा हम सभी को प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे हमको अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की सेवा करने पर ही हमें भगवान के पास जाने का पथ वो प्रशस्त होता है। तो भगवान के पहले हमें आध्यात्मिक गुरु की सेवा करनी होती है, ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। So some people, they want to go directly to God. They don't want to go through the guru. They say, no, I just want to go directly. I just want Krishna. I just want Narasingha Dev. I just want God. But that's not the process. And Lord Chaitanya taught us the process is to be the servant of the servant of the servant. Not that we go directly to God. तो बहुत से लोग प्रत्यक्ष रूप से सिर्फ भगवान के पास ही जाके सेवा करना चाहते हैं कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधे भगवान की सेवा करूंगा। लेकिन यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि ये जो पथ है, ये भगवान के दासों के दासों के दासों के दासों के दास के रूप में सेवा करके प्राप्त होती है। It's the spiritual master who gives us the seed of devotion, and he teaches us how to cultivate that seed of devotion, how to grow that seed of devotion into the creeper of devotion, and how to get the fruit of our devotion, how to develop love of God. Therefore, we can never give up the spiritual master, and we can never repay the debt to the spiritual teacher. तो आध्यात्मिक गुरु ही हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज रोपते हैं और फिर उसको सींचने का प्रबंध, और कैसे वो फिर बीज बड़े होकर के वृक्ष बने, वो कृपा लता बने, और लता से फिर कैसे फल, वहां तक गुरु की ही सहायता, गुरु की ही कृपा से ये संभव हो पाता है। इसीलिए आध्यात्मिक गुरु को कभी भी, एक जो गंभीर शिष्य हैं, वो कभी भी आध्यात्मिक गुरु को नहीं छोड़ सकते। Prahlad Maharaj never wants to give up the service of his spiritual master. He never thinks that now I've repaid my debt. No, you can never repay that debt. It's always there, because that's the real meaning of the mercy of the spiritual master, that he's given us something which is so valuable that there's no way we can repay. तो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से वो अपने आध्यात्मिक गुरु को बिल्कुल उनके बारे में गुणगान कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते, और ये बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कभी भी हम उनका ऋण नहीं चुका सकते। कितना भी कुछ करने पर उनका ऋण हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है, सदैव। इसलिए हमेशा आध्यात्मिक गुरु के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। Prahlad Maharaj analyzes the reason for the Lord's appearance. He said, I think you just came because I was saying that you are everywhere, and my father was challenging me, so you wanted my words to be confirmed. Therefore, you appeared. So this was your only reason, just to confirm my words. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, उनके आने का कारण बताते हैं कि भगवान आप तो प्रकट हुए हैं क्योंकि मैं कह रहा था, मेरे पिता जब बोल रहे थे कि क्या यहाँ पर हैं भगवान, यहाँ पर हैं, और मैंने कहा हाँ यहाँ पर हैं भगवान, तो मेरे वचन को सत्य स्थापित करने के लिए ही आप प्रकट हुए हैं। So then Prahlad Maharaj is describing about how the Lord creates the material world, and how from Vishnu comes the Garbhodakashaya Vishnu, expands in the universe, and then Brahma is grown. Brahma appears from the lotus flower, and Brahma gets to see the Supreme Lord.
और तब वो किस प्रकार से भगवान सृष्टि की रचना करते हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं कि विष्णु से गर्भोत्छाई विष्णु, फिर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, भगवान को देख पाते हैं। At first, Lord Brahma cannot see the Lord. He's doing great tapasya and he's looking, he cannot find the source of the lotus flower. He cannot understand where the Lord comes. Then he does more tapasya and then he gets the realization that the Lord is everywhere, in everything, in his body as well. और तो भगवान को देखने के पहले वो काफी तपस्या करते हैं ब्रह्मा जी, वो सोचने के लिए कि ये नाभि कमल का इसका स्रोत क्या है। और जब काफी वो तपस्या करते हैं तब लंबे समय की तपस्या के पश्चात वो अनुभूति कर पाते हैं कि भगवान तो सर्व जगह व्याप्त हैं। Prahlad Maharaj gives a beautiful example. He said, just like the flowers grow and they have different fragrances and different colors, but they get their fragrance, their aroma and their color, it all comes from the earth, all comes from the ground. But we don't see these things in the ground. In the same way, the Lord's potencies are everywhere and in everything, but we don't see them. But they're there, they're coming from the Lord. तो वहां पर उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज किस प्रकार से इतने सुंदर जो फूल उगते हैं वो फूल जो हैं इसी धरती माता से वायु के संपर्क से बहुत सुंदर सुंदर रंग में अलग अलग रंग में अलग अलग सुगंध प्रदान करते हैं, लेकिन वो सुगंध और रंग हम लोग देख नहीं पाते हैं वायु में या फिर धरती माता में। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की इतनी अचिंत्य शक्तियां हैं जो इस सारे सृष्टि का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते हैं, भगवान की उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर, अनुभूति नहीं कर पाते हैं। Prahlad Maharaj describes how the Lord appears in different forms, how he comes also, he came one time as Haigriva with the head of a horse, and that time he killed two demons also, those two demons, Madhu and Kaitaba, who had taken the Vedas. And so the Lord came as Haigriva, killed them, and then he gave the Vedic knowledge to Lord Brahma. और तब वो भगवान के अलग अलग रूप जो आए थे, भगवान अवतार लिए थे, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से आप एक बार हयग्रीव बन के आए और आपने मधु और कैटव नामक दो असुरों का वध किया जो कि वेदों को चुरा लिए गए थे ब्रह्मा जी से, तो आपने उनका वध किया। इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। So in this way, Prahlad Maharaj is aware how the Lord comes in many different forms. Sometimes he comes as a fish, sometimes as a tortoise, sometimes he comes as an animal or a demigod, sometimes he comes as a great saint, sometimes he's a human being. तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को ज्ञात है कि भगवान कैसे विभिन्न विभिन्न रूपों में आते हैं, जैसे कभी मत्स्य रूप में, कभी कुर्मा के रूप में, कभी देवताओं के रूप में। तो इस प्रकार से आके भगवान जो हैं वो किस प्रकार से कार्य संपादित करते हैं, विभिन्न रूपों के बारे में यहाँ पर वो वर्णन कर रहे हैं। But Prahlad Maharaj describes, in the Kali Yuga, you don't come, you don't reveal yourself in the Kali Yuga. So you're known as Tri Yuga, that you only come in 3 yugas. The Lord doesn't come, you know. Of course, Lord Chaitanya did come in the Kali Yuga, but Lord Chaitanya didn't reveal himself as the Supreme Lord. और तब वो कहते हैं कि किस प्रकार से आप 3 युग में ही आते हैं, कलयुग में आप अपना रूप सबको प्रकट नहीं करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु आते हैं, लेकिन वो अपने आप को भगवान के रूप में प्रकट नहीं करते हैं। इसलिए कहते हैं कि आपको त्रियुगी कहा जाता है क्योंकि आप 3 युग में ही प्रकट होते हैं। So Prahlad Maharaj describes his situation. He said sometimes my mind is very polluted and I'm never satisfied. I have so many desires. Sometimes I'm sinful desires. Sometimes I'm lusty. I'm very fallen. I'm from a very poor background. My family are all demons. And so this kind of life, I do not know how I'll be able to talk about your activities. और तब प्रहलाद महाराज कहते हैं विनम्र होकर के कि मैं तो बहुत ही पतित हूँ, मेरे अंदर कभी काम की इच्छाएं, क्रोध की इच्छाएं, इस प्रकार से, क्योंकि मैं ऐसे कुल में जन्म लिया हूँ, मैं इससे उबर नहीं पा रहा हूँ
और ऐसी स्थिति में कैसे मैं आपके गुणों का गुणगान कर सकता हूं प्रभु? So we know how people in Kali Yuga, there's many people like that. They don't like to hear about Krishna. They don't like to hear topics of Krishna. Therefore, Lord Chaitanya, understanding the nature of people in the Kali Yuga, he came with the Sankirtan movement. Let everyone get purified by chanting the holy name. And after they chant the holy name, then they'll be able to hear the topics of Krishna. तो कलयुग में हम सब देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के अंदर कोई रुचि नहीं है भगवान कृष्ण के बारे में, उनका रूप गुण के बारे में कुछ श्रवण करने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बड़े ही उदार अवतार के रूप में अवतरित होकर के हम सबको संकीर्तन आंदोलन, संकीर्तन यज्ञ देते हैं कि जब भगवान के नाम का, पवित्र नाम का जप कीर्तन करेंगे, तब जाकर के हम इस योग्य बन पाएंगे कि हम भगवान के रूप गुण की जो लीलाएं हैं उसमें हम रुचि ले सकें। Prahlad Maharaj is not really talking about himself, but he's talking about common people in the material world. He's describing their condition. Prahlad Maharaj, he's a great soul. He's a sometimes we say he's a Nitya Siddha, and sometimes we say Sadhana Siddha. Actually, he's described to be a mixed devotee, that he's partly Nitya Siddha, eternally liberated, and he's partly sadhana siddha, that he became perfect by doing sadhana. But he's a great devotee, and his prayers are describing the situation of common people in this material world. तो प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं वो एक सामान्य जीव जो है इस भौतिक संसार के, उनके बारे में ये बात कही जा रही है। वो तो स्वयं जो है, वो कभी-कभी उनके बारे में कहा जाता है कि वो नित्य सिद्ध है और वो या तो साधन सिद्ध है, उसका मिश्रित रूप, लेकिन वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो ये जो बात कही जा रही है, ये जो भौतिक संसार के जो जीव हैं, सामान्य जीव, उनके बारे में ये वर्णन किया जा रहा है। Prahlad Maharaj describes the situation of the conditioned soul. He said, just like a person has many wives, so each wife wants to go different place. So the same way, each of our senses, they demand attention in different ways. The tongue wants to taste something, the eyes want to see something, the skin wants to touch something, the nose wants to smell. Each of the senses, they're demanding attention, and each one their own satisfaction. They don't think about others. So this way, there's constant struggle between the senses and the mind, where to go, what to do. This is the condition, the position of the conditioned soul. So the only way to control the senses is to chant the holy name. Otherwise, we'll always be in a disturbed condition. तो प्रहलाद महाराज एक सामान्य जीव की यहाँ पर स्थिति को प्रकट कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति की कई पत्नियां हो तो उनकी कई इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, वो सभी इंद्रियों की अपनी अलग इच्छाएं होती हैं और वो व्यक्ति को अपनी ओर खींचती हैं, और वो व्यक्ति कई तरफ खींचा जाता है और पूर्ण रूप से वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। तो ये ऐसी हमारी असहाय स्थिति हो जाती है इस भौतिक संसार में, और इससे निकलने का एक ही उपाय है कि भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लिया जाए। So Prahlad Maharaj describes, he said, I'm not so much worried about my own deliverance, because wherever I go, I can chant the holy name. It's not a problem for me. But I am concerned with love for those unfortunate people who are so attached to this material world, and this world of their family and the society and friends, which keep them in the bondage of material life. I'm worried about them. I'm thinking about their welfare. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं अपने बारे में चिंतित नहीं हूं, क्योंकि आपकी कृपा से, अनादि कृपा से मेरा मन तो आपके गुणगान सुनने में पूर्ण रूप से, जो उसका अमृत है उसको सुनने में एकदम मग्न हो गया है। लेकिन ऐसे लोग, जो लोग माया सुख ढूंढना चाहते हैं, जो बिल्कुल विमूढ़ हैं, जो कि अभी उनकी इंद्रियां जो हैं बिल्कुल वो विमुख चेतस हो गई हैं और अपनी इंद्रियों को
भोग में लगे हुए हैं, माया का सुख लेना चाहते हैं, मैं ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में बहुत चिंतित हूँ। Prahlad Maharaj said, we're all foolish people. There's so many foolish people. But we know that you, the Supreme Lord, you're very kind to the fallen souls who are devotees. So we pray that you will be kind to us and also show us how we can be delivered. तो कह रहे हैं कि भगवान, यहाँ तो बहुत से लोग मूर्ख हैं, उनको ज्ञात नहीं है जीवन में क्या करना है, लेकिन आप परम दयालु हैं और आपकी कृपा होगी इनके ऊपर। ये इस प्रकार का हमको इस आश्वासन है कि आप जरूर कृपा करेंगे और तभी हम सबका उद्धार हो पाएगा। So to get free from the material world, this is the problem. And for this purpose, we see there are many people who they don't think about delivering others. They only think about their own self. And they go to the forest, they go to the mountains, and they take vows of silence. They don't want to say anything. They do this Mona Vrat. They don't think about anybody else. They only think about their own liberation. So Prahlad Maharaj said, I don't want to be like that. I don't want to be liberated alone and leave everybody here. I can't do that. तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं और वो कहीं जाकर के एकांत में भजन कर सकते हैं या कुछ क्रिया करते हैं अपने उद्धार के लिए। बहुत ऐसे लोग नहीं होते जो सबके बारे में, सबके हित के बारे में सोचते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो हैं सबका उद्धार हो, सबको आपका प्रेम प्राप्त हो। ऐसा वो अपने आप को ऐसी स्तुति कर रहे हैं भगवान के समक्ष। So Prahlad Maharaj showing the thinking of the Vaishnava, how a Vaishnava is always compassionate on the fallen souls. He always thinks how to deliver them. He's not worried about his own self, his own condition. He's thinking about others. तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज एक वैष्णव सिद्धांत जो है उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और वैष्णव के विचार को प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैष्णव वो सिर्फ अपने हित के बारे में नहीं सोचते, वो सभी के कल्याण के बारे में, सभी के हित के बारे में, परोपकार के बारे में हमेशा विचार करते रहते हैं। So Prabhupada said, our business is not going to the mountains. He said, our business is going to the crowded places where the mass of people are and giving them Krishna consciousness, awakening Krishna consciousness in them. So this is the purpose of the Krishna consciousness movement. तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमारा कार्य है, ऐसा नहीं कि हम जाकर जंगल में एकांत में रहे, नहीं, हम ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जाना चाहते हैं जहां पर जाकर के हम सबको बता सकें, कृष्ण भावनामृत प्रचार कर सकें और उनको भगवान के चरण कमलों की ओर लेके आ सकें। Just like Lord Chaitanya sent Lord Nityananda and Haridas door to door, so our Krishna conscious devotees are also meant for that we should go door to door and think how to deliver people from their material life. जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जी को घर घर द्वार द्वार पर भेजा था जाकर के सबको विनती करने के लिए कि आप भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करिए, उसी प्रकार ये जो वैष्णव सिद्धांत हैं, विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव सिद्धांत, सबको जाकर के उत्साहित करना है कि भगवान का नाम ले, भगवान के भक्ति में युक्त हो। So why are people so attached to this material life? They have no spiritual education. They don't know anything about the soul, and they don't understand how they're simply serving their mind and senses. And they're thinking they're happy when actually they're simply suffering. They're simply chewing what has already been chewed. ज्यादातर लोग जो इंद्र तृप्ति की ओर लगे हुए हैं उनको ज्ञात नहीं है कि ये जो एक बार उसमें से सब रस निकल गया है, उसी वस्तु को फिर से पुनः पुनः उसको चूसने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कोई रस नहीं है और इस प्रकार से वो उनका हर प्रयास वो विफल और निराश युक्त होता है। So their happiness is like when you have an itching, some irritation in the skin and you scratch it. So we scratch it, we think, oh, this is relief. This, I'm getting some pleasure, some happiness, some relief from the suffering. So material happiness is like that. It's like
scratching, when you have some irritation in the skin, it's not real happiness. It's an illusion. तो भौतिक सुख उसी प्रकार से बता रहे हैं जिस प्रकार से कि किसी को खुजली हो जाए तो खुजलाने में जो आनंद आता है उसमें अपना ही रक्त निकलता है, अपना ही नुकसान होता है खुजली करने में। उसी प्रकार से ये भौतिक सुख के बारे में जो लोग चर्चा करते हैं वो उसी प्रकार का ये सुख है। ये वास्तविक सुख नहीं है, ये भ्रम है सिर्फ। So Prahlad Maharaj explains that if we really want to please the Lord, we have to engage in devotional service. And he recommends 6 different kinds of activities, particularly offering prayers, and then hearing the glories of the Lord. और तब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान की भक्ति में सेवा में युक्त होना पड़ेगा। और यहाँ पर विशेष रूप से वो 6 प्रकार की सेवाओं की चर्चा करते हैं। सबसे पहले भगवान की आराधना करना और उनका स्मरण, उनके बारे में श्रवण करना। So just like in our temples every day we offer prayers, we do kirtan and chant prayers. Then we hear the glories of the Lord, we hear the Srimad Bhagavatam. We want to also work on behalf of the Lord. We should work on, and we should offer the results of our activities for the Lord. तो भगवान के बारे में श्रवण की जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन के मंदिर में भी हम सबको सिखाया जाता है कैसे भगवान के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन जप करना और भगवान के लिए कार्य करना और उस कार्य के फल को भगवान को अर्पित करना। And we should worship him and remember his lotus feet. और उनकी आराधना करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए और उनके चरण कमलों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। So these six kinds of devotional service, they can greatly please the Lord. And if we please the Lord, then our life is successful. तो ये 6 प्रकार की जो क्रियाएं हैं भगवान को बहुत प्रसन्न करती हैं और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। So in this way, Prahlad Maharaj offered his prayers and the Lord was happy. He gave up his anger and the Lord begins to speak to Prahlad Maharaj. और इस प्रकार से जब प्रार्थना की प्रहलाद महाराज ने तो भगवान प्रसन्न हो गए, शांत हो गए और अब भगवान उनकी प्रार्थनाओं से संतुष्ट होकर अब भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। He said, I'm very pleased with you. He said, I want to have my pastime with you. My pastime is to satisfy your desires. He said, I like to do this with my devotees. I like to fulfill all their desires. So just tell me what you would like. What benediction would you like? तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं भगवान नरसिंह देव कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे और अब मैं आपके साथ में आदान प्रदान करना चाहता हूँ लीला जो मैं अपने भक्तों के साथ में करता हूँ कि आप बताइए अब आपको क्या वरदान, आपकी क्या इच्छा है जिसको मैं वरदान के रूप में आपको दे सकूं और आपकी इच्छा को पूर्ण कर सकूं। मैं आपकी इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूँ। Lord Narasingha naturally feels so much compassion for Prahlad. He knew Prahlad had been put through a lot by his father, and the Lord Narasingha wants to reward Prahlad. So he asked Prahlad, just tell me what I can give you. तो अब वो बहुत करुणामय है भगवान प्रहलाद महाराज के प्रति, जानते हुए कि किस प्रकार से उनके पिता ने उनको कष्ट दिए थे और अब उनको भगवान उसका पुरस्कार देना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि बताओ आपकी क्या इच्छा है, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। The Lord said, I can fulfill the desires of everyone. Whatever you ask, I can give it. I'm the only one who can do that. So you should take advantage. Just tell me what you want. But Prahlad Maharaj is the pure devotee. He's not interested in material happiness. तो भगवान कह रहे हैं कि अब आप मुझे बताइए क्या चाहिए आपको, मैं आपकी सर्व इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ क्योंकि मैं ही वो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। क्या चाहिए बताइए। लेकिन चूंकि प्रहलाद महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई भी भौतिक वस्तु, भौतिक इच्छाएं कुछ भी उनके मन में नहीं है। So it's the nature of the pure devotee that they don't want to get any reward from the Lord. They just want to give service to the Lord. तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों की पहचान है कि वो भगवान से कुछ भी
उनसे वो वरदान नहीं चाहते, वो सिर्फ भगवान की सेवा करना चाहते हैं। So when Prahlad Maharaj heard Lord Nrsingadev speak like this, Prahlad Maharaj says to Lord Nrsingadev, he said, "Oh, my Lord, come on." He said, "You know, I'm born in an atheist family, so I'm very attached to material enjoyment. So don't tempt me like this." तो जब ऐसे भगवान ने बोलना शुरू किया तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि देखिए भगवान, मैं तो एक इस प्रकार के नास्तिक परिवार में जन्म लिया हूँ और वहां पर जहां पर की भौतिक सुख सुविधाएं वो हैं, उनका वही जीवन का लक्ष्य है, तो कृपा करके आप मुझे उसके लिए उत्साहित मत करिए, प्रेरित मत करिए। I'm very afraid of material life. I just simply want to get away from all this material life. That's why I've taken shelter at your lotus feet. I didn't worship you to get something from you. मैं भौतिक जीवन से बहुत ही भयभीत हूँ पहले से ही, और इसके लिए मैंने आपकी सेवा नहीं की कि मुझे आप कुछ भौतिक लाभ प्रदान करेंगे। मैं तो उससे दूर होना चाहता हूँ भौतिक जीवन से। Of course, there are people who approach the Lord with their material desires. They simply want to get something. These people are like merchants. They simply come to sell some goods to make some profit. तो कह रहे कि हाँ, ऐसे लोग होते हैं जो आपकी सेवा जो करते हैं, आपकी प्रार्थना किसी लाभ हेतु, वो एक व्यापारी के समान है, वो व्यापार करते हैं, कुछ देते हैं और बदले में कुछ आपसे लेते हैं। But Prahlad Maharaj tells Lord Nrsingadev, he said, you've put me into this material world to show what is pure devotion. You want me to, I'm supposed to be the pure devotee. So how can you expect me to want, why I should ask you for some material blessings? That would be crazy. करे कि लेकिन मैं तो आपका भक्त हूँ और आप मुझे इस भौतिक संसार में यहाँ पर रखा है और आप मुझे फिर पुनः ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मैं यहाँ के लिए कुछ मांगूं, ये तो एक उन्मत्तता होगी, कुछ मांगना यहाँ के लिए। Yeah, if I ask something from you for my devotional service, that's not pure devotion. That's just business. तो अगर मैं आपसे कुछ मांगता हूँ अपने भक्ति के बदले में, तो इसका मतलब ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये तो एक व्यापार हो जाएगा फिर। People who want to get something material, they should worship the demigods. They're easy to please. It's not easy to please Lord Vishnu or Lord Krishna. किसी को भौतिक उपलब्धि चाहिए तो उनको देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, वो बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु कृष्ण को प्रसन्न करना ये आसान नहीं है। And if you worship Krishna, Krishna may take everything away from you. He won't give you, he will take everything away from you. That's his mercy. Krishna likes to take everything away from the devotee to make them helpless so that they can surrender more. और भगवान कृष्ण तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जब वो अपनी अहतु की कृपा करेंगे तो सब कुछ हर लेंगे, कुछ देंगे नहीं बल्कि सब कुछ ले लेंगे अगर वो कृपा करेंगे, जिससे कि भक्त असहाय हो जाए और असहाय अवस्था में वो भगवान की ही शरण ग्रहण करे। Prahlad Maharaj gives the example. He said, just like the relationship between the master and the servant. So if the servant wants to make to get some special profit from his master, then he's not a very good servant, that he simply wants to take something from the master. And the same way, if the master has to give something to the servant in order to keep the respect of the servant, then that master is also not a very pure master. तो वो कह रहे हैं कि उदाहरण देते हैं किस प्रकार से अगर एक कोई सेवक है अपने मालिक से कुछ चाहते हैं वो सेवा के बदले में, तो वो एक उचित सेवक नहीं है। और उसी प्रकार अगर जो स्वामी है वो भी सेवा के बदले में कुछ दे रहे हैं, उनको सेवा का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो भी एक अच्छे स्वामी नहीं है। We see people worshipping demigods to get material blessings. We see how how they can please Lord Shiva. Lord Shiva is Asutosh, easily pleased, but he's also easily angered. So they have to be very careful. तुम देखते हैं कैसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं उनसे कुछ प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे कि शिव जी
उनका एक नाम आशुतोष भी है, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, इसलिए बहुत सावधानी से ही उनसे युक्त होना चाहिए। So Prahlad Maharaj tells Lord Nrsingadev, he said, I want to be your unmotivated servant, and I want you to be my eternal master. I know you are. You're my eternal master. I don't want anything to change that relationship. You're the master, and I am your servant. We don't have any other relationship. और वो तब कहते हैं कि मैं आपका शाश्वत रूप से आपका ही दास रहना चाहता हूं और शाश्वत रूप से आप मेरे स्वामी हैं आप, और ऐसे ही रहें, इसके अलावा और कोई संबंध मैं नहीं चाहता हूं आपके साथ। So this is Krishna consciousness. Jiva Svarupahaya Nitya Krishna Das, said we're all eternally the servants of the Supreme Lord. Ekala Ishvara Krishna or Sabhritya. Right? One Supreme Master, all others are the servants. तो यही हमारी जीव की स्थिति है यहाँ पर कि वो भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में हम हैं। भगवान कृष्ण ही वही ईश्वर हैं और बाकी सभी उनके दास हैं, उनके सेवक हैं। जैसे वो नचाते हैं वैसे ही सब लोग नाचते हैं। So Prahlad Maharaj, he doesn't want to take service from the Lord. He wants to give service to the Lord. He's not come to get something from him. He's come to give. He wants to give his service to the Lord. तो भगवान से कुछ सेवा लेने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए आए हैं। वो भगवान को सेवा देना चाहते हैं, कुछ उनसे उसके बदले में कुछ चाहते नहीं हैं वो। So then Prahlad Maharaj says to Lord Narasingha, if you really want to give me a benediction, then just bless me that within my heart there will be no material desires. That is the benediction I want from you. That is the best thing you can give me. और तब वो कहते हैं कि अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं भगवान, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा न रह जाए, रंच मात्र भी भौतिक इच्छा मेरे हृदय में न रह जाए। यही मेरे लिए सबसे उचित आशीर्वाद होगा। We've seen Lord Chaitanya's Shikshastikam, similar prayer. Lord Chaitanya said, I don't want wealth, I don't want followers, I don't want beautiful women. I only want devotional service, birth after birth. तो ऐसी प्रार्थना हम देखते हैं शिक्षाष्टकम में, चतुर्शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु करते हैं कि मुझे न तो कोई धन चाहिए, न तो कोई जन चाहिए, जन्म चाहिए अच्छे गुरुकुल में, न कविता, न सुंदरी, मुझे जन्म जन्म तक खाली आपकी भक्ति, अहितों की भक्ति मिलती रहे। So that desire to serve the Lord, that is not material, that is a spiritual desire. तो भगवान को सेवा करने की जो इच्छा है, ये भौतिक इच्छा नहीं है, ये आध्यात्मिक इच्छा है। So Prahlad Maharaj is very careful what he wants to take from the Lord, how he requests the Lord. He says that I've been troubled all my life with material desires. I don't want to increase my material desires. I want to extinguish them. तो प्रहलाद महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मैं अपनी भौतिक इच्छाओं को अब नहीं बढ़ाना चाहता, अब उनको पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहता हूं, उनको बिल्कुल समाप्त करना चाहता हूं। And when I can actually get rid of, when I can replace my material desires with spiritual desires, that will be the greatest wealth. That will be the greatest opulence that I can possess. That will be like the opulence of the Lord himself, like the opulence of Lord Narasingha. तो जब मैं अपने भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में परिवर्तित कर दूं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा, मेरे लिए धन वैभव, वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। ऐसे नरसिंह भगवान का जो आभूषण है, ऐसे बोल रहे हैं वो। So the servants of the Lord, they enjoy on an equal level with the Lord. Just like when the king comes and his servants come with the king, then the king lives in the palace and the servants also live in the palace serving the king. They enjoy on the equal opulence with the king.
The same way the Lord's devotees, they also enjoy the opulence of the Lord. तो वो कह रहे हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के जैसा ही वैभव उनको भी प्राप्त होता है। उदाहरण रूप में जब कोई राजा आते हैं, उनके साथ में कोई सेवक आते हैं, तो जैसे राजा रहते हैं वैसे ही सेवक भी रहते हैं, उसी प्रकार की सुविधा उनको भी प्रदान की जाती है। So Lord Narasingha Dev tells Prahlad Maharaj, yes, he said, it is good that you have no desire for anything. He said, anyway, he said, still, I order you to enjoy the opulences of your father, because your father had a wonderful kingdom. So you go to his kingdom and you stay there and you become the king. Your father was the king, now he's dead. You should be the new king. And you should rule that kingdom for the period of 1 manu, or 1 manvantara. 1 manvantara means like 71 millenniums, right? 71 cycles of the 4 ages. और तब कहते हैं नरसिंहदेव भगवान की, ठीक है, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अब मेरा आदेश है आपके लिए कि आपके पिता का वध हो चुका है, उनका बहुत अच्छा राज्य है, उस राज्य के ऊपर आप जाकर के राज्य करेंगे, शासन करेंगे आने वाले 1 मनवंतर तक। इसका अर्थ है 71 चतुर्युग, 71 चतुर्युग मिलाकर के 1 मनवंतर होते हैं। Lord Narasingha Dev tells Prahlad Maharaj, you live there and remember me, remembering me that I am the super soul in the heart of everyone. And in this way, worship me and give up all material activities. And then at the end of your life, you're going to go back to Godhead. You'll go back to the spiritual world. तो इस प्रकार से जाके आप सेवा करिए, राज्य करिए, वहां पर राज्य करिए और राज्य करते हुए मेरा स्मरण करते रहिए, ये जानते हुए कि परमात्मा के रूप में मैं हमेशा विराजमान हूं आपके साथ में। और इस प्रकार से जब आप राज करेंगे तो 1 मनवंतर होने के पश्चात आप भगवत धाम वापस आएंगे। Yeah, because Lord Narasingha Dev wants Prahlad to enjoy his pious activities and to get rid of any sinful reactions which might be there. And so he stays in this world for 1 manvantara and finishes off all of his karma, and then he will be able to go back to Godhead. And when he goes back to Godhead, his glories will be sung all over the universe, even in the higher planetary system. They'll sing the glories of Prahlad Maharaj. तो नरसिंहदेव की इच्छा थी कि उनके जितने भी पुण्य हैं उसको वो भोग कर लें, और कोई अगर ऐसे कुछ पाप के कुछ फल अगर बचे हुए हैं तो वो भी निकल जाएं, और इस प्रकार से मनवंतर के पश्चात जब वो जाएंगे भगवत धाम तो उनका गुणगान, उनकी महिमा इतनी होगी कि यहाँ तक कि ऊपर के लोकों में भी लोग, वहां के वासी उनका गुणगान करेंगे, उनकी महिमा का श्रवण करेंगे। Just by remembering the prayers and the activities of Prahlad Maharaj, we get free from the reactions of our material activities. तो सिर्फ प्रहलाद महाराज के ऐसे कार्यकलापों के बारे में श्रवण करने मात्र से हम अपने भौतिक कार्यकलापों के जो युक्ति होती, आसक्ति होती है, उससे बंधन छूट जाता है। So Prahlad Maharaj just has one thing left. He wants to know, he wants to ask. He said, I'm just worried. He said, he said, I know my father was very sinful and he tried to fight with you and he was very angry and very nasty and he gave so much trouble to me, he tried to kill me. But he said, I don't want anything bad to happen to him. I don't want him to go to hell. महाराज कहते कि लेकिन एक चीज है भगवान की, मेरे पिताश्री हालांकि उन्होंने आपसे युद्ध किया, बहुत दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ भी उन्होंने काफी मुझे ताड़ना दी, प्रताड़ना दी मुझे, लेकिन मेरे मन में उनके प्रति कोई भी घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि उनके साथ में कुछ बुरा हो, अर्थात उनको नरक जाना पड़े। But Lord Narasingha Dev tells Prahlad, it's not a problem, Prahlad. Your father has been purified. Not only your father, but for 21 generations in your family, they've all been purified. Simply because your presence in that dynasty, they have all been purified. और तब उन्होंने कहा कि प्रहलाद महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करिए, खाली आपके पिता ही नहीं, आपके 21 पीढ़ियां जो हैं वो सभी जो हैं वो भगवत धाम जाने वाली हैं, आपके भक्ति के प्रताप से। Wherever there's a great devotee, that whole country becomes purified.
जहां पर भी कोई एक भक्त होते हैं तो पूरा पूरा देश समाज भक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। So in this way, Lord Narasingha then said, he tells Prahlad, I want you to do Shraddha for your father. That will be good. And then you become the king. So Lord Brahma and Lord Shiva, with the help of the Brahmins, they established Prahlad Maharaj on the throne as the king. और तब वो अपने पिताजी का श्राद्ध करते हैं उन सबकी उपस्थिति में, देवताओं की उपस्थिति में। उसके बाद ब्रह्मा जी, शिव जी सब लोग मिलकर के उनको उनके राज पर स्थापित करते हैं। प्रहलाद महाराज वहां के राजा बनते हैं। And Prahlad, Lord Narasingha, well, Lord Brahma comes and he wants to offer prayers to Lord Narasingha and thank him for everything, for killing the demon Hiranyakashipu and for taking care of all the procedures, instructing them and everything, and hearing Prahlad's prayers. So after Brahma offers his prayers again to Lord Narasingha, Lord Narasingha then tells Brahma that, you know, you be more careful in giving benedictions next time. Just like if you give milk to a snake, the snake becomes more poisonous. So when you give benedictions to a demon, it's more dangerous. So you gave us so much trouble this time by giving benedictions to Hiranyakashipu. Don't you give any more benedictions again. तो ब्रह्मा जी फिर वहां पर जब स्वीकार हो जाते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं और भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं, उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आपकी वजह से हिरण्यकशिपु का वध हुआ और जो आपने सब विधि यहाँ पर बताई, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हमने सुनी, तो उनका आभार प्रकट करते हैं। तो भगवान नरसिंह देव वो सुनने के पश्चात उनको कहते हैं ब्रह्मा जी को कि देखो ब्रह्मा, आगे से सावधान रहना वरदान देने के लिए, क्योंकि आपको वरदान देने की वजह से ही इतने कष्ट हुए सबको। और उन्होंने कहा कि कभी भी सर्प को दूध नहीं देना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि सर्प दूध पी करके और विषैला हो जाता है, वैसे ही ऐसे आसुरिक लोग ऐसे वरदान पा करके और वो भयानक हो जाते हैं। तो कहते हैं कि आगे से आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आगे कभी भी ऐसा वरदान ऐसे व्यक्तियों को मत दीजिएगा। So then Lord Narasingha left and went back to the spiritual world, back to his kingdom, his planet in the spiritual sky, and to leave Prahlad to rule the kingdom. और इस प्रकार से फिर भगवान नरसिंह देव अपने धाम वापस जाते हैं और प्रहलाद महाराज फिर वहां पर राज्य करते हैं, शासन करते हैं। And Lord Brahma also went back, the demigods, they all went back to their abode. ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव और सभी देवतागण अपने अपने लोकों को वापस जाते हैं। So in this way, Lord Narasingha's pastime is described. Lord Narasingha appeared there. That was a Treta Yuga. But Lord Narasingha also came in the Kali Yuga. He came here in Mayapur just 500 years ago, in the time of Chaitanya Mahaprabhu, and he came to see the Chankasi. तो नरसिंह देव भगवान इस प्रकार सतयुग में की लीला है ये। उसके पश्चात कलयुग में भी भगवान आए थे यहाँ पर मायापुर में, जहाँ पर चांद काजी ने उनका दर्शन किया था। He came in an angry mood and he left his nail marks on the chest of the Chankasi and warned him, don't you ever break my Madanga again. The Chankasi had broken Madanga and stopped Sankirtan. But then Lord Narasingha came and told Chankasi, don't you do that again. If you ever do that again, I will rip you to shreds. तो उन्होंने चांद काजी के यहाँ पर दर्शन किया। दर्शन का मतलब उनके छाती पर उनके बड़े क्रोधित होकर के आए थे और उनके नाखून के निशान उनके छाती पर थे, क्योंकि उन्होंने मृदंग था उसका जो है मृदंग तोड़ा था उन्होंने, जो है जब कीर्तन कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के न्यायीगण। तो उन्होंने कहा कि अब आगे कभी भी मेरे मृदंग को मत तोड़ना, और नहीं तो फिर मैं आकर के आपका वध कर दूंगा, ऐसे नरसिंह देव ने कहा था। So in Mayapur Dham, we also have, of course, Narasingha, which is where Lord Narasingha came after he fought with Hiranyakashipu. It said he came here to Narasingha, just beside, not far away from our Mayapur temple, only like 15 minutes. And Lord Narasingha came there and rested, and the demigods also came. When Lord Narasingha came, the demigods followed him. They all stayed there at Narasingha.
तो यहाँ पर मायापुर धाम में ही मंदिर से ज्यादा दूर नहीं, 15 मिनट की दूरी पर एक स्थान है नरसिंह पल्ली, जहाँ पर नरसिंह भगवान हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात वहां पर आकर के विश्राम किए थे, और जब वो वहां पर आए थे तो उनके साथ अन्य देवतागण भी वहां पर आए थे। So Lord Narasingha has a special relationship with Mayapur Dham, and he came here in this Kali Yuga even. तो भगवान नरसिंह देव मायापुर धाम के साथ उनका विशेष संबंध है, और इसलिए कलयुग में भी वो यहाँ पर आए थे मायापुर धाम में। Not seen by everyone, but seen by the Chankasi, and he left his nail marks for everyone to see. तो सबको यहाँ पर दर्शन प्राप्त नहीं हुआ था मायापुर में, लेकिन चांद काजी ने उनको देखा था और उनके छाती पर उनके नख के निशान छूट गए थे। So Lord Narasingha, very dear to all the devotees, we always pray to Lord Narasingha, pray for his mercy. We want his shelter. We know he's the real one to give protection. नरसिंह भगवान बहुत ही करुणामय हैं, बड़े दयालु हैं अपने भक्तों के ऊपर। भक्त लोग हमेशा भगवान नरसिंह देव की शरण चाहते हैं, वो जानते हैं कि वो हमारे रक्षक हैं। Our mother and father cannot protect us. Our doctors cannot protect us. Lord Narasingha can protect us. हमारे माता पिता, यहाँ तक कि चिकित्सक, ये लोग हमारी रक्षा नहीं कर सकते वास्तविक रूप में, लेकिन भगवान नरसिंह देव हमारी वास्तविक रूप में भक्तों की रक्षा करते हैं। So let us all keep very strong faith in the shelter of the lotus feet of Lord Narasingha. तो हम सभी मिलकर के बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, बहुत ही दृढ़ श्रद्धा रखते हैं भगवान नरसिंह देव के ऊपर कि वो हमारे परम रक्षक हैं। वो Shri Narasingha Bhagavan ki जय, Srila Prabhupada ki जय। Okay, thank you very much. Thank you so much, Maharaj. Thank you so much, Maharaj. This 4 days was so wonderful, Maharaj, and we really learned so many. Although we have heard this pastime again so many times, but it was so wonderfully described, Maharaj. So nectar, and so many instructions in between which we have given. We'll try to follow, Maharaj, in our life, especially from the teaching of Prahlad Maharaj. So many wonderful instructions came, Maharaj, that how we can imbibe those qualities and we try to cultivate those qualities, and we can make some progress, Maharaj. So thank you so much, Maharaj, for your valuable time, and it is wonderful pastime. Thank you, Prabhu. Very grateful to you, Maharaj. For giving Maharaj, me we'll just yeah, Maharaj, we'll just go to Maharaj again, Asim Roy Prabhuji house, and then Maharaj will just okay, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Maharaj, Dandvat Pranam. Hare Krishna, Dhanavad. Are you able to see us? Yes, I can see you. Yeah. Yes. Maharaj, we'd like to offer our small offering to you. Please accept it. Oh, wonderful, beautiful, so colorful, so nice. Delicious. Thank you, Maharaj. Oh, very nice. Thank you so much. Maharaj, we'd like to offer a small aarti for you. We were not able to offer in the beginning, so we'd like to offer it now. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Oh, children there, yeah. Come. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj. Jaya, you can also come at the front, Jaya. All family Hare- members can come. Yes, Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Maharaj, for visiting our house. Thank you. Very nice to come to your house. Thank you so much. Okay. Thank you. Very good. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Thank you so much. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. So, Maharaj, we are very, very grateful to you, Maharaj, that you gave so much time, Maharaj, 4 days, a very detailed description of Lord Narasimha. And we could complete, you could complete, Maharaj, the entire pastime from the Hiranyakashipu, Hiranyaksha, then how Lord Narasimha appeared, and especially that how all the people